Friends, we are very fortunate that we have an accomplished lady amongst us who will be giving a talk on not a very common talk of a topic, but it's a topic which relates to all of us in our life in some way, but personally or with someone that we know. So it's going to be very interesting. It's more to do with life experience, sharing, and handling. But before we get into what all she has to share her thoughts on, I would like to introduce her. Nidhi Gambhirr is a self-made independent woman. She studied from Convent of Jesus and Mary, graduated by correspondence along with additional course of interior designing, hotel management in regular college through Polytechnic. She started her first job in Tupperware, which made her explore her career in many fields. In 2003, she did radio jockey audition. Oh boy. She opened an abacus school. Additionally, with other activities like dance, music for kids. She is a proud prize winning teacher in SIP. I was the other day, we were introducing her in some other session, and a very qualified gentleman asked me, "What is SIP?" So honestly, even I did not know. So I had to Google and then send it to him, and he replied, "Oh, wow." So changes never made her weaker. Nidhi continued her hard work in her own business and fashion world. She never looked back thereafter. Her experiences in life had always been a teaching to rise. Working for Universal Investments in real estate company showed her a new path. She is picked by TDI company as head CRM in corporate office, Gold Market, Delhi. She self-learning continued to be Tropic Foods as general manager corporate affairs, leading to all experiences. She founded a company, IN91 Networks. Now, thus again, I'm quite sure whenever next we get to meet her, she will explain to us why did she name it so interestingly, IN91 Network. I'm sure there is some reasoning behind it. However, this company was formed to facilitate all domains collaboratively, example marketing, social media, operations, events, entertainment, software, real estate. Nidhi believes work is worship, and we worship her. That is her mantra. A woman of substance in real terms. We are fortunate to have her in this session today. May we all welcome her and get enriched by whatever she has to speak on, share her knowledge with us. Welcome, Nidhi. Thank you, Bhaiya. Thank you for this warm gesture in this Zena Global Foundation family. And today, as the topic is decoupling, I would I'm very much interested to talk on this topic. And I would like to tell everybody what is decoupling. It is a very beautiful word. Like couple is a formation of love between two people, and decoupling can also be done with the formation of similar love.
with and peace. The only thing is peace is added to it. So I have been divorced lately, that is in 2022, September. I was separated in 2003 from my husband, but we were living under the same roof with two beautiful daughters. I am a mother of two daughters. So, talking on this topic, but I'm happily divorced, and so is my husband, and we are till today platonically connected with each other. It's not that we divorce doesn't mean that it's a fight. No, divorce is a very beautiful word if uh, it has been treated the same as marriage. Like marriage is beautiful, divorce is similar to that. The only thing is in marriage, two people unite, and here two people get separated. But it has to be beautifully done in the same manner, which my journey was very beautiful in this from separation to divorce. And I thank my ex husband, the society, and my kids. But we don't get everything easily as a platter. We really have to work hard by keeping a very, very positive, peaceful mindset towards spirituality and humanity. I would say these keywords are very important because hatred can lead you to anything, and hatred always leads to war. So, firstly, why this happens? Why is the name divorce happens? There are reasons. There are reasons why when two people unite, whether in, I would say, called as love marriage or arranged marriage, that has nothing to do with it. But when two people unite, whatever age it is, after 18, and some people even get married after 13, I believe, if we talk about the our ancestors or years behind if we go. So age is no bar to this. People used to get separated and divorced at that time also, but the ratio was less. And today the ratio is more than a marriage. And people, it's very difficult to get married today, but it is very easy to come out of marriage. Is the scenario what is the reality of 2023? So the reasons are very much important why the divorce is happening. And some people really have to face a very, very tough time to go in this process. A lot of violence, torture, trauma towards from the society to the couple and kids also. So that is why I started this topic that if we do anything peacefully, we don't have to go under any stress, negativity, or trauma. But yes, 90% of society, they are taking divorce equal to war. And whereas everybody has to face female, male, kids, and society near about relations. What are the reasons of divorce? Because a marriage is, I believe, is run under four parameters. When you are complete in four parameters: physically, financially, mentally, emotionally. When all these parameters are exchanged, these energies are exchanged with a couple, and I believe then you don't go in the journey of divorce. Nobody wants to lose upon good energies to separate. So something is lacking over here. Any one of these are lacking, whether you take it physically, financially, you take it emotionally or mentally. We start with mentally, mental level, thought process are not matching. Why are thought process so important? I don't want to give my example in this, but yes, I'm talking about all the general 90% of people, why they are picking up the choice of having a divorce or separation or any other thing other than this after marriage. So thought process is the biggest compatibility and energy which is exchanged, because if your thoughts are not matched, nothing can be matched. Nothing can be matched. Neither you can be connected emotionally. Second comes emotionally, you cannot be connected emotionally. You cannot be connected physically, and financially, I would say, is the last piece of cake, which
you cater. So mentally, the thought process leads to negativity. How is that? Two people get married. When they get married, they are firstly connected with society, that is the nearest of their relations, be it parents, siblings, or all the nearest of your society people, like relatives, which mama, chachi, taya, tai, nanand, mami, mama, and all kind of relations. So when two people's thoughts are not matched, the mis the the biggest misuse what society does is divide them and rule, divide them mentally. They both are talking different language, different speech, like south and north pole. यहाँ जाना है, नहीं जाना है, सगन देना है, नहीं देना, इतना देना है, इतना कम देना है, उसकी मामा की लड़की, चाची की लड़की, ताई की लड़की, all these society errors become the biggest reason for a couple to go on a different journey. And if not that, thought process part two is kids. Kids also become one of the reason for not no match. फादर ने कुछ कह दिया, मदर के थॉट प्रोसेस कुछ और है. फादर कहता है दिस इज राइट और रॉन्ग, मदर कहती है नो दैट इज राइट और रॉन्ग. Thirdly comes the financial part, thought process in finances. How much is the income? How much is the expenses? That is not matching. If both are working, not matching because mindset not going in the same direction. One is housewife, the other one is working, too much of burden, not matching because mindset is not working. So I believe you can live with less finances also, income in your account and richness. With divorce is done in all kind of parameters. Even a rich person who is very high class, rich society, media, politicians, the divorce goes there also. If they are poor, divorce goes there also. And even if you're middle class, divorce are counted there also. So money has nothing to do with it, is what I'm trying to say. But yes, mindset. Similar mindset is very, very important. The compatibility, understanding, intensity. If these things are merging in the same direction, they both are going on the same direction, divorce can never happen. And the life of a couple goes very beautifully. Now we talk about understanding. There are some people who says कि हाँ भाई हमें बर्दाश्त करना है, एडजस्ट करना है. दे आर वुमेन इन दी अर्लियर टाइम्स जो कहते हैं कि शादी टूटती नहीं है, साथ जन्म का रिश्ता है, एडजस्ट करना है. बट टुडे डू यू थिंक our age generation or coming up age generation would ever use this statement हमें एडजस्ट करना है? एडजस्ट का तो मीनिंग ही नहीं पता होगा आजकल की किसी जनरेशन को, और ना कि पहले इतना पता था. Time is changing, ratio of divorce is happening and happening. Until or unless the mindset, compatibility, thought process does not go in same direction, divorce will keep on happening. Number two comes the emotional part. Yes, emotions. Emotions are also a very important topic. Emotion नहीं है जी एक दूसरे के लिए, जिसके कारण हो जाते हैं extramarital affairs because they are not emotionally connected to each other. They don't feel the pain what the other partner is going through. If you talk about a man, not feeling the pain what a woman is going through. And if you talk about a woman, today man and woman are equally the same. We cannot blame कि आज औरत पे जुल्म ढा रहे हैं. No, equally आदमी पे भी similar जुल्म ढल रहा है. Today both the genders are having the same value. Emotions, female talk against their husband because they don't have any emotion. दर्द होएगा, दुख होएगा, पेन होगा, बाहर तकलीफ होएगी. Who cares? When this kind of an attitude comes, that also becomes a reason for a divorce. Finances. If we talk about finances, पति कमाता है जी, बीवी एडजस्ट नहीं करती है.
earlier what used to happen, if we talk about generations back, one man was the only, you know, I would say backbone of the family, जिसको कहते हैं घर का मुखिया. आदमी कमाता था, औरत क्या करती थी, घर के सारे काम करती थी. देयर वर नो मेड्स एट दैट टाइम. शी यूज्ड टू वॉश यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, पति को खाना देना है. गॉड, हस्बैंड वाज अ गॉड, एंड द रेशियो वाज वेरी मच लेस ऑन अ डिवोर्स, क्योंकि every man had a habit to be pampered, starting from their grandmother, mother, wife, sister, daughter. They had always seen pamper. But time has changed. When women started working, they started working equally to a man, shoulder to shoulder. It's a question from her side. Why should I be the only one working at home? आदमी, जब मैं बाहर जाके काम कर सकती हूँ, आदमी घर में क्यों नहीं कर सकता? बट क्योंकि आदमियों को आदत है शुरू से अपने फादर को, दादा को देखने की कि वो औरतों के हाथों से बहुत पैम्पर है, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दिस थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस इन टुडेज टाइम. इट विल टेक next 3-4 generation for a complete change. When they will see their fathers and our age grandfathers had been working at home, then after 2-3 generation, kids were men or boys would know we have a similar value as a woman. We also have the we should also do the same work like washing utensils and taking care of the house, because our wife, our mother is a working mother, working wife. So maybe, some kind of understanding can happen. But if we talk about our age, it is yet not accepted. Lot of high hopes and expectation men are carrying towards their wife. And because it's a competitive world, women have the right question to ask, अकेले मैं क्यों बाहर का भी काम करूं, घर का भी करूं, बच्चों का भी करूं? Whereas some kind of, again, mindset, thought process, understanding is not matching, which becomes a reason. Fourth point is physical. Again, a very, very important part of to hold a marriage. If you are physically not connected, marriage can go towards divorce. If we talk about today's time, a man is working in a company who is surrounded by all different kind of smart women. And if we talk about similar way about a woman, they are working in company to, they have reached up to corporate level, where they are also surrounded by smart, handsome, educated men. Attraction plays the role only when the couple, husband, wife, are not physically connected too intensely. पहले जमाने में क्या होता था, औरतें घर में रहती थी, एक्सपोजर नहीं होता था. ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर क्या हो गया, शादियों में गए अपने रिश्तेदारों के साथ. आज औरत कम नहीं है. शी इज एक्सपोर्ड टू द आउटर ग्लिटर स्पार्कलिंग वर्ल्ड. शी ऑल्सो हैज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू कैच अपॉन. सो बोल तो फिजिकल बोल दे कि बंद कर. बोल दीजिए. the connection is so important, which cannot let any of the uh, partner to, you can say, cheat or go out or get dissatisfied by their partner. So I believe these 4 parameters are very important for to sustain a marriage in today's time. If I talk about today's generation and next generations to come, if we fulfill these 4 parameters, the ratio of divorce can be very less. But again, there is a very different topic. What woman has to face in this journey of divorce? My topic was complete that I spoke why, what is the reason of a divorce, why it leads to a divorce. And to continue this topic, I would want Ali Bhai or whoever is in the part of this Zena Global Family Meeting, I want the conversation to take over and proceed further. Thank you. मुश्किल हो जाती है. जी Ali bhai, जी Nidhi भाई. has, she has invited you जी to
बोलना make बोलना it है ना? to make नहीं it नहीं, a I'll make it. ओके निधि बहन, हाँ, जो आप बोली हैं वो 16 आने सच है, 16 आने सच है, एंड आई एग्री विथ यू 100% ऑन दिस. हाँ, और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं आई ऑल्सो बीन थ्रू स्टॉर्मी सेशंस एंड ब्यूटीफुल सेशंस, बट ये है कि आई एग्री विथ यू दैट इफ both have to work and both have to respect each other's values and traditions, which is extremely important for marriage to last and to be successful. वो घर देखिए, हर घर में लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ होता है, बट एक चीज होती है कि एक्सट्रीमिज्म में चला जाए, where communication breaks down and then you know uh, enmity starts, it gets very nasty. तो उसमें किसी ना किसी तरह से you have to compromise, you have to see to the future of the children. हाँ, and you also have to see to your future कि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं. The main thing is the finances, which are very important. If you're financially secure and if your spouse is financially secure, there will be no problems. But yes, होते हैं थोड़े बहुत, but again you have to even after that fight or this thing, you have to make up, kiss and make it up. क्योंकि ये आखिर कब तक चलेगा? यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा होता है, यूरोप में ऐसे होता है. The rate of divorce has gone up tremendously in India also because of intolerance and impatience, I would say. But there is a limit to the Indian woman's patience also. भाई कहाँ तक वो आएगा? कोई पानी पिला दो, खाना बना दो और ये पिला दो, वो कर दो, पैर दबा दो, वो नहीं होता. अब वक्त बदल गया है और वक्त के साथ इंसान को भी बदलना चाहिए, ये चक्कर है. तो यही मैं आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों में. और ये ऐसी बात है कि जैसे शब और सुबह होती है ना, दोनों जुड़ के भी नहीं पॉसिबल होता है. शब हो गई आपकी शाम और सुबह हो गई सुबह, तो दोनों जुड़ के भी अलग होती हैं जैसे. और लब और दुआ होती है, लब से आपकी दुआ निकलती है, मगर दोनों जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं. तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जिस दौर से आप गुजरी हैं और कोई और गुजरा है, वो भी एक सीख है, और सीख से आपको बहुत कुछ दर्द भी है और बहुत कुछ मालूम भी चला. एक तजुर्बा है, एक हसीन तजुर्बा है. तो यही मैं कहना चाहता हूँ निधि बहन कि आपको मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, और हमेशा आपकी कदर करता रहूँ कि आप बहुत बहुत बड़ा जोखिम लिया है और अभी तक आप इतना कर रही हैं. और कोई होता तो पता नहीं क्या होता. आप सुन रही हैं? हेलो जी दीदी बहन, सुन रही हैं? जी, तो बिल्कुल मैं सुन रही हूँ. तो ये नहीं, ये मतलब मैं मक्खनबाजी नहीं कर रहा हूँ. मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, और क्योंकि मैं दर्द महसूस कर सकता हूँ दूर से, आंखों से मुझे मालूम चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से मालूम चल जाता है, पर नहीं साला क्या है अपन में, ये सब मालूम चल जाता है कि भाई है आदमी दर्द से गुजर रहा है. और बस भाई यही दुआ करता हूँ कि जहाँ जैसे भी आप, जो भी आप आगे बच्चों के लिए डिसीजन लें और अपने लिए लें, वो आपको खुश रखे और आपको सलामत रखे. और कभी आपको मतलब पीछे मुड़ के ना देखना पाए. मतलब हाँ, देखना पड़ता है. तो यही है कि हाँ, पुराने बड़े हसीन लम्हे थे, जो भी थे, खट्टे मीठे कड़वे, मगर उसमें भी एक सीख थी. अब जब हम लोग बच्चों को कहते हैं कि ऐसा मत करो, मेरे साथ वैसा हुआ था. ऑल पेरेंट्स आर लाइक दैट ना, कि आई एक्सपीरियंस इट. हमारे बच्चे क्या कहते हैं कि यू माइट हैव एक्सपीरियंस इट, वी विल नॉट एक्सपीरियंस इट. ये आजकल के बच्चे बड़े तेज होते हैं. एंड यह है कि हम भी पीछे लगे हैं बच्चों की, भाई तुम सेटल डाउन, दिस एंड दैट, ये होता है. तो बच्चे हमको साफ साफ बोल देते, पापा और मम्मा यू चिल. हाँ, जब हमको करना होगा हम करेंगे. लेट अस मेक आवर करियर्स फर्स्ट
and I have to seek a career wife and a career who's doing similar job as me. तो ये कुछ चीजें हैं which is ये बहुत सीरियसली नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ तो इंडिया में ये है कि भाई हाय बच्चा हो गया 28 साल का हो गया 25 साल का, हाय ब्याह करो जल्दी करो ब्याह करो, बच्चे कब आएंगे, पोता का ये पोती कब आएगी। तो ये चक्कर होता है। और बच्चे विद थिंग कि वो अपनी स्पेस, क्या आजकल होता है ना स्पेस, आई वांट स्पेस, SPACE, हाँ, तो वो उनको नहीं मिलती है। और हम लोग हमेशा एज पेरेंट्स वी लाइक टू मॉलिक ऑर्डर कि भाई तू बेटा ये कर, तू ये कर, वो कर, वो कर। वो अब चलता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मगर नहीं चलता भी है, क्या करें। मैं अभी बाहर हवा में आ गया हूँ ताकि नीचे कुछ टेंशन मामला नहीं है, मगर कुछ डिस्कशन चल रहा है नीचे, तो मैंने कहा कि बाहर ऊपर आ जाओ और खुल्लम खुल्ला बात करें। तो आपको कोई इतराज तो नहीं है राजीव भाई, निधि बहन, ऑल ओके? तो आप कुछ बोली नहीं? हाँ जी, तो अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए आई बिलीव वी आर गेटिंग आउट ऑफ ट्रैक एंड टॉपिक। तो तो अभी आपका सुझाव चाहती हैं, या जो आपने कह दिया वो तो हम मानते हैं कि वो फाइनल चीज है? नहीं, मैं राजीव भाई, आई बिलीव यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। आपका चीफ हो गया। यस निधि बोलो। हाँ जी, सो आई बिलीव भैया आई हैव सेड इट just little bit what how much I have to, but the conversation is not proceeding in the same topic, and I believe we should. It's time to wind up. टाइम कितना हो गया है? मतलब आप सहमत हैं जो हमने कहा, कि जो आपसे कहा वो उससे सहमत हैं कि नहीं है, या उसमें आगे कुछ हो नहीं, सकता है आगे? निधि हाँ, का कहना है कि जी सहमत और असहमत की बात नहीं है, जी। बट उसने जिस मुद्दों को उठाते हुए जिस तरीके से वो बोली थी अपने टॉपिक को, अ, हम्म। वो समन्वय उसमें बैठ नहीं रहा था। हम्म। तो शी सजेस्टेड कि अब एक से एक जोड़कर अगर बढ़ नहीं पा रहे हैं हाँ तो आगे इस टॉपिक को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, बिकॉज शी इज द स्पीकर एंड हाँ यू आर हाँ द पर्सन हु इज इंटरेक्टिंग विद हर। हाँ हाँ। मैं अब पर्सन हु इज इंटरेक्टिंग, if you are right in your own way, she हाँ हाँ obviously speaker, she is right in her presentation in her own way, but as a speaker if she has felt that to continue हम्म, the discussion, हाँ maybe अब we are not maybe we are not going in the right direction or whatever it is, so that is fair, because हाँ हाँ ये कभी होता ही नहीं है कभी भी, या हाँ जब इंटरेक्टिव सेशन बनाते हो तो उसमें आपसे मैं एग्री करूं, मेरे से आप एग्री करो, हम दोनों एक ही तरीके के बातें करें, यही तो एडवांटेज होता है इंटरेक्ट। जी ये जी जी। हर व्यक्ति खुल के अपने विचार को रख पाता है। बिल्कुल सही। आई थिंक दैट गुड एंड पर ये थैंक आज यू। इन्होंने बहुत बहुत बढ़िया बोली हैं, और मेरा मतलब दिल खुश हो गया है इनको पहली बार सुन के। निधि बहन आप सुन रही हैं कि नहीं? बिल्कुल सुन रही हूँ जी। दिल खुश हो गया है, दिल बगबग हो रहा है कि आज अपने, वैसे आप चुप रहती हैं, मगर वो चुप्पी भी जो होता है कि एक ज्वालामुखी है, कब फटेगा खुदा न जाने। देखिए तो मेरा आज मैंने फेवरेट इसलिए।
राजीव भाई बुरा मत मानिएगा। और आज नहीं आपने नहीं, वो कहते हैं वाकई में एक निचोड़ जो होती है, जो वो कहते हैं कीमती कीमती पत्थर जो होते हैं, निकाल के आपने दिखा दिए हैं कि ये होता है और होता रहेगा। और मैं क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा हुआ है, और उसका मतलब दर्द जो था वो हम लोग को सहना पड़ा। हम कुछ कह नहीं पाए क्योंकि हम छोटे थे, मगर हम जानते हैं कि अगर किसी की बहन, किसी बहू किसी के साथ हो तो आ, दर्द तो होता है, दर्द दर्द होता है, क्या करें, खुशी तो होती नहीं है। और यही कह सकते हैं कि भाई अब वक्त है अलविदा का, इधर चलो, तुम उधर जाओ, हम इधर जाते हैं। तो ये है। और मेरे मतलब मेरी भी 4 बहनें हैं, और मैं जानता हूँ कि कैसे क्या होता है, कैसे नहीं समझ आता है कि खैर अब जहाँ पे भी हैं वो खुश रहें, और जो भी है उनके आमिद भी खुश रहें। पर पर अब ये जिंदगी है, यही जिंदगी है, क्या करें दीदी जी। तो ठीक है भैया, तो एक दफा आई एक जी, आप आगे चलिए अली हाँ अली जी, भाई, थोड़ा। जी भाई अली साहब। भाई, निधि निधि का एक दूसरा सेशन अगले 2-3 मिनट में शुरू होने वाला है। जी जी। तो मेरे को डंडा मारेगी अगर नहीं निधि बहन, आई एम सो हैप्पी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं माशाल्लाह। नजर से आप नजर उतार लीजिएगा अपनी। और कहते हैं जो भी है, जहाँ पे भी आप जाएं उसमें आपको तरक्की मिले, खुशी मिले और सक्सेस मिले। मेरी तो यही दुआएं हैं। और अगर ये नाचीज कुछ कर सकता है आपके लिए तो जरूर बताइएगा निधि बहन। मतलब आज आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि निधि बहन को कि नहीं काला नहीं निधि काजल, बहन, ये तो मैंने देखा नहीं जी। मतलब इनकी काला काजल लगा लेना, नजर न लगे। हाँ हाँ हाँ, बस हुआ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप वही करिएगा। और मैं इजाजत लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच भाई आज। निधि बहन, माफी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ ऊंच नीच कह दिया है, माफी चाहता हूँ। थैंक मगर यू इस टॉपिक के लिए मुझे कुछ कहने का मौका मिला। ये हम्म, बहुत खूबसूरत चीज है जिसको बहुत नफरत से देखा जाता है, बहुत ही कहते हैं कि एक लो लेवल पे देखा जाता है, जैसे हम्म, बेइज्जती महसूस की जाती है सोसाइटी में। बट मैं ना ना कहती कुछ हूँ ये भी बहुत ही खूबसूरत चीज है, और इसको भी अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए, जिसको हम डिवोर्स कहते हैं या डीकपलिंग कहते हैं। हम्म, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। हाँ हाँ, और खुशी से बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम एक सिंगल वुमेन है, और हमने बहुत खूबसूरती से अपने हस्बैंड के साथ अलग हुए थे, जो कि आज भी हम दोस्त बन के कनेक्टेड है। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत जरूर करनी पड़ी, बट हम्म। सबको इसी तरीके से मेहनत करनी चाहिए कि ये नफरत की तरफ ना जाए, बस। सही बात है, सही बात, नफरत ना जाए, नफरत नमस्ते। ना बढ़े। हाँ जी। नफरत की आग जो होती है सबको जला देती है। चलो, और एक थैंक यू चीज है निधि एवरीवन, निधि बहन, एक थैंक चीज है, यू, माफ करना सीख दीजिए, माफ कर दीजिए। जहां माफ करेंगी सब थैंक चीज यू। चली जाएगी। ओके जी, तो मैं इजाजत लेना चाहूंगी। थैंक या यू, या सल्यूट वी यू, वी ऑल सल्यूट यू निधि जी, सल्यूट यू। ओके जी।